kids. Today we are taking class 10th and it's supplementary reader and lesson number 5, the footprints without feet. This is the story taken from the novel The Invisible Man, written by one of the most famous English writer, H.G. Wells. The Invisible Man is basically a novel and it is a story of a scientist, Mr. Griffin. Here we are getting a short impression, or you can say a short summary type of extract from the novel. This is a wonderful and one of the most interesting story you are going to read, and you will definitely love to have it and read it and enjoy it, and definitely you are going to tell a lot many friends of yours when you are going to read it and enjoy it. ठीक है. So the story is Mr. Griffin है एक बहुत brilliant scientist है. कुछ खास करते हैं वो. क्या खास करते हैं? वो एक फॉर्मूला डिस्कवर करते हैं, हाउ टू बिकम इनविजिबल, जो अभी तक हम नहीं कर पाए. बट दिस इज अ फिक्शन है. वो सारी स्टोरीज है जिनमें इमेजिनेशन, खूब सारी इमेजिनेशन ऑथर की होती है, राइटर की या नॉवलिस्ट की होती है. तो ये एक फिक्शन नॉवल आप कह सकते हैं, साइंस फिक्शन भी आप कह सकते हैं. और इसमें मिस्टर ग्रिफिन हैज़ बीन शोन एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज वेल एज अ लॉलेस पर्सन. तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट एज वेल एज अ लॉलेस पर्सन. ये हम पूरा पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस द होल थिंग. तो मिस्टर ग्रिफिन क्या है? ही हैड डिस्कवर्ड अ फॉर्मूला टू बिकम इनविजिबल. यू ऑल मे हैव सीन अ मूवी मिस्टर इंडिया, अ हिंदी मूवी जिसमें अनिल कपूर है इन द मेन रोल, और वो इनविजिबल हो जाते हैं. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज स्टोरीज. यहाँ जो है हमारे साइंटिस्ट हैं मिस्टर ग्रिफिन, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ फेलो. वो अपनी उस ब्रिलियंस को, उस इनविजिबिलिटी को एक अच्छे यूज़ में नहीं ला रहे हैं, वो उसको रॉन्गली यूज़ कर रहे हैं. मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर ने जो रोल किया था, वो गरीबों की हेल्प करते हैं और ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ स्टोरी. तो वहाँ वो एक अच्छे एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रूव करते हैं और इनविजिबल ही रहते हैं स्टोरी में भी. इफ़ यू हैवंट वॉच द मूवी यू कैन वॉच एंड एन्जॉय इट. बट दिस इज अ स्टोरी हैविंग ऑलमोस्ट अ सिमिलर सेटअप और सिमिलर प्लॉट, बट द कैरेक्टर्स रोल इज नेगेटिव वन. तो मिस्टर ग्रिफिन क्या करते हैं? He becomes invisible, but he can be felt. आप उसे महसूस कर सकते हैं. अगर आपके बगल से निकले हैं, आपको थोड़ा पुश करके गए हैं, तो आप महसूस कर लेंगे कि वो यहाँ से गुजरे हैं. But he becomes invisible. Invisible on the pretext of being naked. अगर वो completely naked है, कुछ भी नहीं पहना है, one cannot see him or watch him. आपको वो नज़र आएंगे ही नहीं. सबसे फनी चीज़ क्या है? He is a person who got this formula, became invisible, but he chose the wrong time of the year. It was a winter season when he started cheating the people, or he started playing the tricks with the different people. So we are going to have this story from this para to para. I think it will be better for you. If you are having your book by the side of you, you can go like that. So in the very beginning we are going to have two questions, and the first one is, how did the invisible man first become visible? पहली बार वो कब visible होते हैं? And the second is, why was he wandering the streets? वो इधर से उधर क्यों भटक रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? अब उनकी खास बातें देखिए invisibility के साथ में. If he is invisible and because all the time he cannot work as a thief, वो एक चोर की तरह बिहेवियर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं उनको अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ ही इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग ही विल बी इनविजिबल, एंड दैट दिस वे ही कैनॉट सर्वाइव इन दिस डेड विंटर ऑफ द विंटर. जनरली इन इंग्लैंड में, लंदन में जो दिसंबर जनवरी की ठंड होती है, वो माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है. ऐसी ठंड में उनको सर्वाइव करना मुश्किल है. उनको घर भी चाहिए, मकान भी, कोई कमरा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ वो कंटिन्यू स्टे कर सके. तो क्या करना होता है उनको? He starts wearing the clothes. You can see some 2-3 pics are there in your textbook. You can see that if he is wearing the trousers, only the trouser is visible.
his feet are not visible, his upper part of the body is not visible. And if he is wearing that trousers and shirts and then some scarf and the goggles, only the part that is covered with the cloth, that part is visible, other parts are not visible. Suppose कीजिए कि उन्होंने यहाँ तक का स्लीव्स का कुछ शर्ट पहना, तो शर्ट यहाँ तक का शर्ट तो नज़र आ रहा है, आगे की फिंगर्स और ये थंब वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आता है. सो पीपल जनरली गेट हॉरिफाइड टू सी सच फिगर्स मूविंग अराउंड, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुपर नेचुरल कहानियाँ सुनी हैं, भूतों की, प्रेतों की, ऐसे चलते हैं, ऐसे होते हैं एंड ऑल दैट. तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो लोगों को थोड़ा डरा देती हैं. अब उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें कपड़े पहनने के साथ साथ अपने यहाँ से, ये जो पार्ट है हैंड्स का, यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ तक भी उनका ये स्लीव शुरू होती है शर्ट की, यहाँ तक पूरा उनको कवर करना होता है, जिससे पीपल डोंट गेट हॉरिफाइड टू वॉच हिम. ठीक है, अब लेसन हमारा शुरू होता है. हाउ इट बिगिंस दैट टू बॉयज आर देयर एंड दे आर वॉचिंग सम फुटप्रिंट्स, बट दे आर नॉट एबल टू सी हुज फुटप्रिंट्स दीज आर. ये किसके पैरों के निशान है वो नहीं देख पाते हैं. और दे बिकम क्यूरियस, दे बिकम एक्साइटेड टू गेट टू नो कि कौन है जिसके पैरों के निशान है और वो नज़र आ ही नहीं रहा है हमें. सो दे स्टार्टेड चेजिंग दोज फुटप्रिंट्स एंड दे आर कम्प्लीटली, दीज फुटप्रिंट्स आर मेड बाय द मड. वो कहीं कीचड़ के हैं और वो मूव कर रहे हैं, और जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, कीचड़ कम होता जाएगा एंड दीज फुट मार्क्स आर गेटिंग फेंटर वन आफ्टर another. ये तो हुआ है, but they have seen these footprints in the mid of the London. London is one of the most civilized city of the world, you can say. तो लंदन के बिल्कुल बीच में, शहर के बीच में पैरों के कीचड़ के निशान, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा है. So gradually these footmarks started becoming fainter. धीरे धीरे वो फीके पड़ते चले गए. Finally these disappeared and these boy got confused who this fellow may be and whose footprints these might be. तो लेसन का नाम ही है footprints without feet. अब देखिए क्या हुआ. He was a lawless person. Lawless person means science क्या कहता है हमें. Science says if you are discovering something or if you are inventing something, that should be put to the good use for the humanity or for the mankind, for the betterment of the world or the universe. हम दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए, मानवता के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को अच्छे यूज़ में लाएं. लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किसी का कुछ भला ना करके खुद का भी कुछ भला खास नहीं कर पाए हैं और इधर से उधर ये बस घूम रहे हैं. अब इनके साथ क्या हुआ है. फर्स्ट थिंग, ही वॉज लिविंग समवेयर इन समबडीज हाउस. देन दिस लैंडलॉर्ड आस्क्ड फॉर द मनी. व्हाट हैपेंड? He set his house on fire. The first incident that proved that he was a lawless person. उन्होंने अपना बिहेवियर बहुत गंदा बिहेवियर शो किया और उन्होंने अपने मकान मालिक के मकान को ही आग लगा दी, because he had nothing to pay to him. उनको के पास मकान मालिक को कोई किराया देने के लिए नहीं था. And when this fellow, the landlord, said him to go out of the house, he set his house on fire. So this is the first incident that proves that being brilliant, he is a lawless fellow. And one after the another we are going to get many of the incidents that will prove that he was a brilliant scientist as well as a lawless person. And this is, you can say, one of the most important questions that comes again and again in the CBSE examinations, especially board examination. This question comes. Okay, then what happened? He became, after his landlord kicked him out of the house, he became a homeless wanderer. Wanderer means यायावर, घुमक्कड़, भटकने वाला, उसके पास घर नहीं है. Homeless he became, and without clothes, because the first thing is that to become invisible he had to be without the clothes, completely naked or nude, you can say. And without money, because he hadn't made any such a discovery which would have given him a big amount of money. इतना पैसा तो कुछ कमाने जैसी डिस्कवरी की तो है उन्होंने, लेकिन उसे he hasn't put that to a good use, किसी अच्छे काम में नहीं लिया. So now he is homeless and clothless, or you can say without clothes, and he is also without money and quite invisible. So then what happens? The next incident happens. Now he anyhow escaped from that house and these boys were following him. Finally they left him.
Now then comes a line. His adventures were no means over. Means he was doing something adventurous again and again. Actually he should have learnt a lesson. एक लेसन उसे सीख जाना चाहिए था कि he is a scientist, he has become invisible and he should anyhow do something good so that he can survive in the society. लेकिन ऐसा कुछ सोचा ही नहीं उसने. वो तो बिल्कुल दिन भर बदमाशी कुछ ना कुछ बदमाशी में वो लगे रहे, one mischief after another. So what did he do? It was a bad time of the year that he chose. London, mid of the city, December, especially in England, it's very very cold you can say, and now he had to enter into a big London store. वो एक बड़े से लंदन के स्टोर में एंटर कर जाते हैं, जस्ट लाइक अ बिग मॉल. और बिग मॉल्स में आपने देखा है कि वहाँ किचन भी है और कुछ कॉफ़ी डे एंड यू कैन से फास्ट फूड शॉप्स भी हैं, काउंटर्स भी हैं, कुछ क्लोथिंग्स का भी स्टोर्स है. सो ही एंटर्स अ बिग लंदन store for the warmth because he was completely naked. Now the closing time arrives, and when the closing time arrives, the shutters are down and the whole of the shops moves to their houses, and he was free, completely free to enjoy the way he wanted. So he started opening the wrappers, the boxes, and he dressed himself with the best of the clothes. Next, he went to the kitchen, he took meat and wine and coffee and something sweets and whatever he wanted, he started enjoying himself completely. Finally, when he was tired, he went to sleep on a pile of quilts. Next morning, when he should have woke up on time, he didn't do that. He was taking rest and he was completely free. But he got late to wake up. The assistants came, they opened the store and they found him there. They started chasing him, and just to escape from so many people, to escape himself, he started taking off his clothes one by one. He started throwing away the clothes, and again he was naked. He was again without the clothes, again without earlier also he was without a home, but again he found himself without the clothes. Now he had to find some way, anyhow, some way, so that he can dress up himself, because it was very very dead winter, or you can say the month of December, the unbearable winter, the cold wind that cuts like a knife. And these two incidents we have seen. First one, when he set his landlord's house on fire. Second, when he entered this big London store and stole the clothes, and without paying anything, he had filled his belly. Third step, what happens? These are the incidents which are going to help you in writing the answers when it is asked how you can say that being a brilliant scientist, Mr. Griffin put his knowledge to the bad use, or in the bad way he used his knowledge. So the next step, what happens? He moves near a theatrical company. Theatrical company वो कौन सी जगह है जहाँ पर थिएटर्स के लिए लोग ड्रेसअप होने के लिए किराए पर कपड़े लेते हैं या परचेज करते हैं. अब वो वहाँ एंटर कर गए हैं. एंटर करना बहुत आसान है उनके लिए. क्यों आसान है? Being naked, nobody is able to see him. तो वो शॉप्स में इजीली एंटर कर जाते हैं विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीबडी. वो एंटर कर गए. वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठा ली हैं. परचेज तो करना नहीं है, परचेज करना भी नहीं है, बिकॉज ही डजंट हैव मनी. कर ही नहीं सकते हैं, करना क्या नहीं है. तो अब उन्होंने वहाँ से काफ़ी कुछ उठा लिया. क्या उठा लिया? बिग राउंड हैट ही टुक, डार्क ग्लासेस ही टुक, फॉल्स नोज, क्योंकि नोज भी लगानी पड़ेगी उस गॉगल्स को रोकने के लिए, अदरवाइज तो नीचे वाली नोज तो फिर उनकी नज़र नहीं आती है. बुशी साइड विस्कस ही टुक एंड सो मैनी थिंग्स ही टुक. एंड द टाइम व्हेन ही वाज लीविंग द स्टोर, जब वो स्टोर से बाहर आ रहे थे तो क्या किया? शॉपकीपर को हल्का सा झटका मारा और झटका मार के उसकी जेब से उनका पर्स निकाल लिया. एंड दिस वे ही गॉट सम मनी. थोड़ा पैसा उसके पास आ गया. तो देखिए, बीइंग अ साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, वो लोगों के पॉकेट से पैसा भी निकाल रहे हैं. पर्स निकाल लिया उन्होंने. लैंडलॉर्ड के घर को आग भी उन्होंने लगा दी है. तो being a scientist, these are not the things that are desired from a scientist. And this way we are coming to the mid of the lesson, and this the remaining part you will see in the next video. Thank you very much.